Hello, and once again, welcome to the fifth day of our 7-day online classes program for class 10 Odia medium schools, paving the way to sit at the final level UTSE 2024. Started from class 9 and ended in class 10. That will be the all for the UTSE, but our continuous help will be there throughout till you finish your plus 2 and enter into either a medical stream or an engineering stream or any research based institution like ISER, NISER, in Indian Institute of Science. Santosh sir, namaskar. Santosh sir, namaskar. ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି. You have Anil sir, namaskar. So, today will be a discussion on the optics light. You might be wondering that being a chemistry professor, retired, I would be talking on light and reflection and refraction. It might seem little surprising to some, but as and when we continue our discussion, let's have a feel what is going where. Kou pani kuade jauchi, ame tike ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା. Now we are ready to start. First of all, I'll ask you, do you have any doubt? The SAQ of organic naming that we had no answer. But fortunately, Swayamjit had answered those questions and I corrected them and I shared in the group. We are joined by Swayamjit, Subhasmita, Behera, Soumyaranjan, Sai, Pritipadma, Omkar, Rath, Chinmayi, Samal, Chandan, Swai, Biswajit Singh, Bismay Tripathi, and Vishnu Priya, Asu, and Sai Narayan, and many more will join from time to time, because I thought summer mornings are very pleasant and even we can be ready by 5 a.m. 6 a.m. is very, very late. But many guys, they have a habit of sleeping late night. I don't know. They have a habit of sleeping late night. 12টা ଗୋଟେ 2ଟା নহলে ତାକୁ ନିଦ ହବନି. Obviously, they have to wake up late, 7, 8, 9, and they make haste to go to their schools without performing their obligatory duties well. They do not answer the call of nature perfectly. So they believe in the system SOS, as and when required. Accepting answer of the first call, which is uncontrollable, has to be answered. The second call is SOS, as and when required. Many do not have a habit of
answering both the calls while they wake up in the morning, as I'm inclined to believe. So that's why we are starting at 6 o'clock, little late. Now, let me share my screen before we start. I welcome to those who are watching from the YouTube. There are many guys who are watching from the YouTube, including teachers who are also watching what we are doing. Bismay has something to ask. Don't worry, we have enough time. We have enough time. Even I am inclined to, consider of canceling the 7th day and close our 7-day session in 6 days. Of course, if you do not agree, then I have no hesitation to extend to the 7th day. But it is you who will be preparing for the test. And in chemistry, we have done extensively. The only thing which we revised is stoichiometric calculation involving mass, mole. Those things are very, very simple. And make sure that for you, the reaction equation that will be given, you can frame it because all the products will be given. And obviously, if water is not given H2O, you can definitely guess. Why guess? You'll be definitely be sure that the third product or the fourth product is water. That also will not be required. The questions will tell you what are the products and what are the reactants. And then you need to balance. So you have to practice balancing. And in this session, we had learned how to balance by ON method, oxidation number method. And if you want, I can give you a little, few more equations to practice, particularly the tougher ones, not the small ones like decomposition of lead nitrate is that can be handled by heat and trial, by inspection method. But some little tougher redox equations, they need to be balanced by some rule. The algebraic rule is a little primitive. Sometimes it fails. Sometimes, very, very rarely you find that there is some inconsistency between the algebraic method and ON method. You find both of them are correct. They conserve the mass because the principle behind the balancing of an equation is the conservation of mass. So that will be found in both. But in reality, the ON method is correct because the number of electrons lost should be equal to the number of electrons gained. Maybe in 1 lakh, for every 1 lakh, you might find such a discrepancy between algebraic method and so you will find both of them are correct, but which one you adopt? The ON method is accurate because it is logical, right? So before we let's share my screen. And I have to stop annotation because you guys, you are testing my patience level, which is not very high like yours. So now we are joined
by Payoza Mene. Payoza joined fresh now. Asu Vishnupriya from Sundargarh. So these are the doubts which were posed by Swayamjit, and I corrected it. He asked me a question which he didn't also follow, but why this will be called this one. Are you able to see my screen? This is the skeleton structure. And by now, those of you who have practiced a bit can put carbon and the required number of hydrogen atoms and make it look alive. These are skeletons. Just like you have seen skeleton in movies or even in biological, biology laboratories or somewhere. These are skeletal structures. But when you put flesh into the skeleton, it will get life. So now, but with experience, you may feel like playing with skeleton because, when you become a medical student, you don't be scared with skeleton. Now I'm scared. Many of us are scared to go to the skeleton when the human skeleton entirely from top to bottom is just shown before us, or it is in front of us, then we really feel little scared to go close and talk to the skeleton. Once it is a life living being, then we are happy to talk. So if you become little more experienced, then you may play with the skeletal structure. So since this is the terminal carbon, we'll be getting number 1. This is the functional group and terminal carbon. It's connected to only one carbon. Here it is O. 2, then you have to apply the branching rule. If you go this side 3, 4, then isopropyl will be the group, only one group. But if you go in the other side, then you will get 2 branches. 1, 2, 3, 4. So you get the additional methyl branch. And here this is ethyl. And as I told you in ester, this is ester, a derivative of carboxylic acid. So the one which is bonded to the single bond oxygen will be spelled out first, ethyl, or as we commonly call ethyl. Then you forget it. Then count number from the carboxyl carbon, 1, 2, 3, 4, we have already done. Then put a space after ethyl. Then arrange the branches, the prefixes, the branches in alphabetical order. It will be 2-ethyl hyphen 3-methyl, then it will be butanoate. But A-N-E will be replaced by O-A-T-E. O8, butanoate. Now he asked, why not it is ethoxy? Why not? Why ethyl? Why not ethoxy? Because it is bonded to O. Then I said, now this O, the second O, double bond O and second O, both are included in the name alkanoate. This O8 includes both the oxygen atom. When both the oxygen atoms are included, are signified, or are understood from this O8, then you cannot write ethoxy, ethyl. But had it not been, C double bond O would not have been there, then it will be simply ethoxy.
but C double bond O together is called OH. Then he understood it's not alkoxy alkanoate, it is alkyl alkanoate, right? So any doubt you have, so that we can start today's proceeding? Yesterday's doubt kichi achi ki? Guys? So seଠି 3 ethyl नॉय की 2 ethyl कहीं है ना? हाँ? ये जो आंसर रे 3 ethyl नॉय की 2 ethyl लिखा है कौन सुबुनी? सर x भी ट्रिपल आई रे जो आंसर अछि x बीटा x भी या ट्रिपल आई बीटा x लास्ट एटा नहीं सभा लास्ट एटा आगे सर जोड़ा मु डिस्कस करथुली तो आगे आगे हां तो सेठी 3 ethyl की 2 ethyl कहीं है ए 2 रे प्रा इथाइल अछि ए जो इथाइलटा ए इथाइलटा एटा होची ब्रांच इथाइल कथा पड़छि ए इथाइलटा आगुर रहिला मोर काटी देली काई को ए इथाइलटा आगुर रहिला सेटा होची एटा आगे ए इथाइलटा आगरे रहिला सबा आगरे देन अल्कानोएट रो पिला छुआ आगो होची जोटा अल्कोक्सी ग्रुप रो अल्किल अल्कोक्सी लिखा जीवनी किंतु मु कहूची बुझिबा पई अल्कोक्सी ग्रुप रो अल्किलटा आगो लिखा जीवो दैट इज बाय रूल टू नेम एस्टर देन अल्कानोएट रो पिला छुआ 2 रे एथिल अछि 3 रे मेथिल अछि देन ब्यूटानोएट हला again sir अच्छा को माने किछि किछि प्रैक्टिस करछ काली जोडा को मु देइथिली तार आंसर देइथिली यार आंसर देइ नथिली किंतु भलो कला से मते पचार देला सो दैट मु शेयर कर देली समस्त को माने करछ हाथ किलो पायोजा ओमकार आसु अमर चंदन आयुष रथ ना आयुष रथ करनी so many of you have done अन्य माने टी कर दियो न नै टिके हैरान रे पड़ी जीवो टिके प्रैक्टिस न कले मु कहिछि आई एम देयर टू हेल्प यू तुम्हें ना करूचो ना हेल्प मागुचो anyway but you are allowed to attend lectures no problem since we are having the lecture online so anybody can take the benefit at least of listening may not practice may not appear the test because you know these things are not required for your board examination matric board these things you are being trained to adapt to higher level of requirement while you enter into +2 then you won't feel little discouraged or look yourself a little down because many other guys like those who are you know in English medium schools they're taking advanced coaching and all that they know many things and you don't know many things so such a thing should not arise and once you gain confidence the psychology will take the lead to go ahead with full conviction and confidence okay Chandan do you have any question Chandan कहीं हाथटा बंद कर हाथ हाँ हाथ टिकिल माने मु जानिली तमे रोटे किछि पचारिवार अछि किंबा मोर क्वेश्चन रो उत्तर रे तमे हाथ टेकिछ okay today we shall be looking to the light when we say light we take a small part called the visible because you know light is one of the electromagnetic vidyut chumbakiya rasmi which are transverse waves
light, as we commonly say, which are responsible for our vision, our observation, we observe a substance only through the visible light. While it falls on an object and it is reflected from that object and falls into our eye, and the eye detects it. That is the principle. And perhaps in my previous discussion, I have told you that there are so many electromagnetic radiations, 8 type cosmic, comes out from the sun as the smallest wavelength, 0.001 to 0.01 angstrom. These are all in angstrom. You can imagine how small it is. Then gamma rays, which are produced from the radioactive decay. Gamma is not a particle. It is a electromagnetic photon, radiation, having very small wavelength. And you know, energy of the photon, energy of any electromagnetic photon, one packet, is inversely proportional to the lambda. And maybe I have not told you that energy of any of these electromagnetic, and the unit of the energy is called a photon. And you will learn later that these photons are not connected with each other. They appear to be connected, continuous, but really they are discontinuous. Each packet is discrete, separate from the other packet. That, of course, it has wave nature, but it has also particle nature. That is called the dual theory of light. Light, and in fact, all other electromagnetic radiations are not only waves, but also particles. They consist of innumerable units of energy or packets of energy, and each packet is called a photon. And its energy is equal to h, a constant called the Planck's constant, c by lambda, or h into nu. Sai kon कहूछु कि बाबा? Sai? Acha. H is a constant that is called Planck's constant. Don't worry, don't worry. We will not be discussing about this. C is the velocity of light. In fact, आमे जहाकु लाइट रो वेलोसिटी बोली कहू से माने हेले समस्तंकर वेलोसिटी, कॉस्मिक रेज रो, गामा रेज रो, जेतक देखुछ, एक्सरे, हाड़ को फोटो नवा पई जो रेज यूज करा जाए सेटा हला एक्सरे. तार रेंज होची, तार वेवलेंथ रेंज होची 0.1 to 150 एंगस्ट्रॉम. गोटे एंगस्ट्रॉम तुम जानिछ, so small, 10 to the minus 10 meter or 10 to the minus 8 centimeter, so small. Then ultraviolet, अति बाइगणी, then 150 to 3800 angstrom. And now we'll be talking of this visible rays or light rays, 3800 angstrom to 7600 angstrom. And आमे approximately कहि दउ 4000 रु 8000 एमती गोटे रफली कहि दउ 4000 रु 8000 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर रे 400 रु 800 नैनोमीटर. देन आसला इंफ्रारेड. अवलोहित इंफ्रारेड, तार रेंज बहुत अधिका, 7600 रु 6 times 10 to the power positive 6 एंगस्ट्रॉम. तापर आसला ताठू टिके लंगर वेवलेंथ होची माइक्रोवेव. माइक्रोवेव रे सब प्रकार रो कम्युनिकेशन जो होची, सैटेलाइट रे जो जाउची, हमर साउंड इज कन्वर्टेड टू माइक्रोटा जाउची सैटेलाइट रे, पुणी बैक करूची जो जगह को, एवं सेटा पुणी साउंड वेव को कन्वर्ट होची. सो माइक्रोवेव
is from 6 into 10 to the power 6 root 6 into 10 to the power 9. Then asla radio waves, सबुठु longest wavelength. जो थे हमर टेलीविजन रेडियो एटा चालुची ए माने होचंती रेडियो वेव्स और टेलीविजन वेव्स आर भितर इंक्लूडेड आउट अन्य विभाग करा जायनी 6 into 10 to the power 9 to 3 into 10 to the power 13. So let us concentrate, new, it is called let us frequency. That is the number of full waves passing through a particular point in 1 second. So those things we are not going to talk about now. What we are going to talk about when, this is a mirror. Talking about mirror, whose back surface is silver coated. So there is no room for transmission. It will have to be reflected back from the bottom surface. Usually we take the mirror of very small thickness. So we feel as if it is reflected from the top shiny surface. But actually it penetrates to the bottom and it is reflected from the opaque or swachha. स्वच्छ भीतर को पसिला अस्वच्छ जो पछटा अछि सिल्वर कोटिंग एक अछि यूजुअली एल्युमिनियम किमा सिल्वर कोटिंग करा जाय आजिकल सिल्वर टा बहुत कॉस्टली पडुची एल्युमिनियम कोटिंग भी होची जा फल रे सेटा अस्वच्छ सेठी रिफ्लेक्ट होबा एंड प्लेन मिरर विषय हमर डिस्कशन करिवार नै सप्तम श्रेणी रे पढिछ इफ दिस इज द नॉर्मल एंड इट इज बीइंग incident at an angle theta with respect to the normal avilamba it apatana rasmi. I know the Odia terms, but I deliberately am choosing to speak in English to make you acquainted so that when you go to the +2 level to a junior college and the teachers talk in English, then you will not feel alienated. And then it will reflect, and always this is I and this is what this is the angle of reflection and this is angle of incidence. Eta ko kon diya jaye? Eta ko kon usual symbol kon diya jaye? Swayam? Sir, R diya jaye, small r. Reflection R. So तुम जानिच law of reflection आगुरु जानिच that the angle of incidence is equal to angle of reflection. एटा होची प्रतिफलन प्रतिफलित रश्मि एटा इंसिडेंट रे आपतन रश्मि एवं एटा आपतन कोण एटा प्रतिफलन कोण. This is also same, but eta theta plus ele eta theta minus because eta negative direction ro achi सेटा को नेकरी ही प्रूव करिया पड़िबो ए जिंस उडाक. सो जदियो मैग्नीट्यूड थीटा थीटा बट एटा तळे अछि एटा ऊपर अछि. So the signs are opposite. Anyway, forget about it. We are not going to discuss the properties of the images formed, the lateral inversion पार्श्व परिवर्तन हबो, object distance जेतिकी image distance सेतिकी हबो, size एका रहिबो एवं erect रहिबो, same size रहिबो, से जिंस तमे जानिछ. But we will be revising. I am sure many of you have already studied spherical mirrors. What a sphere gote hollow फंपा ग्लास स्फीयर गोलक को जदि काटी दबा एठू एतक विदा कर दबा एतक रहिबो यार जदि बाहर सरफेस टा को जदि सिल्वर कोटिंग करिवा ताहले एटा हे जिवो कनकेव मिरर. अबतल दर्पण एवं सेईटा को जदि आमे करिवा एपट साइड को सिल्वरिंग करिवा ताले एटा हे जिवो उत्तल कन्वेक्स मिरर. एवं यार
सेंटर जो स्पीयर रु कटा है तार रेडियस कहती रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एटा सेंटर तार रेडियस ऑफ कर्वेचर होची आर जो स्पीयर रो सेटा गोटे पार्ट तार रेडियस टा होची रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रतार व्यासार्ध तमे बोधे से कह तेबे आमे जतबेले रे ट्रेसिंग करिवा रे कहला माने गोटे इंडिविजुअल मोनोक्रोमैटिक गोटे वेवलेंथ विशिष्ट रे को बुझे किंतु रे गुड़ाक मिसी गले शह शह हजार हजार रे मिसिकरी गले ताकू कहती बीम ए बीम ऑफ रेडिएशन जो आम रे ट्रेसिंग करवा माने गोटे सिंगल रे को सिंगल मोनोक्रोमैटिक रे को आम ट्रेस करवा जाउची माड़ हबो फेरिबो and you know it travels in straight line as long as it is in one medium, say air or vacuum, or it is continuing in a glass medium or in a water medium, then it travels in straight line, rectilinear motion, and the speed is constant. In air, as you know, the speed air or vacuum, it is approximately vacuum by 1 करा जाइए, sorry 3 actually 3 in way 2.999 something. So हमें देखो 3 करी दो for calculation purpose हमें 3 into 10 to the power 8 meter per second करू. This is the velocity of all electromagnetic radiations. You know, those of you who do not know will be surprised to know that UV velocity जहा visible जो विषय आम डिस्कशन करूचे दृश्यमान जगत दृश्यमान होचे visible radiation जोगु ननी आखि को देखा जानता नहीं रेटिना भितरे पड़िले सिना से जो ये हमर अछि नर्व्स से ताकू नै जीवो ब्रेन को visible हो कि माइक्रोवेव हो कि कॉस्मिक वेव हो कि गामा रेज हो समस्तंकर वेलोसिटी एका एटा होची एयर रे पाखापाखी किंबा वैक्यूम रे एयर टिके अधिका 3 से ताकू 3 एक्चुअली 2.999 समथिंग ताकू टोड़ा उटरा करके 3 करछे एंड जत्ते बेले आमे रिफ्रैक्शन रे नेक्स्ट सिटिंग रे करबा जत्ते बेले से मीडियम चेंज करिवो then only its velocity will change. तो गोटे वेव रो तो मैं जानी रखिबा उचित जो तीनटा प्रॉपर्टी अछि से तीनटा प्रॉपर्टी कोन केमती चिन्हिबो गोटे वेव को ना लैम्बडा गोटे क्रेस्ट रु क्रेस्ट एडजेसेंट क्रेस्ट भितरे दूरता और गोटे ट्रॉप रु गह्वर नेक्स्ट गह्वर जहा शिखर रु शिखर रो दूरता जेतिकी गह्वर रु नेक्स्ट गह्वर दूरता सेतिकी ताको कहती वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य ओडिया पिला गुटी ओडिया कह देले भारी भल लागे न खाली इंग्लिश कहले से माने मोटे एक्सेप्ट करिवनी डोंट रिमूव डेलिबरेटली मु ओडिया लोक अवश्य कथा होती जे आमर पूर्वज माने कोठी उत्तर प्रदेश रो कनौज फनौज से कोठी उठ आस्थिले को काले आस्थिले न जदी आस्थिबे हमर जदी लिनिएज हमें देखिबा किंतु आमे हमर प्रैक्टिस नाही हिंदी भी भलो कहि परनु हिंदी कहिले जणा पडची ओडिया कहिला बलिया सो दैट्स अवश्य प्रैक्टिस कले हिंदी भी भलो कहि हबो तो हमें ज्यादातर इंग्लिश रे कथा वार्ता करछु जदी अदर देन ओडिया देन इंग्लिश हम ज्यादातर जब हिंदी रे कथार्थ करिवा हमर हिंदी फ्लुएंसी मध्य बढ़िबो which you guys children they are quite confident in speaking Hindi. Often we guys the elderly guys speak Hindi, no doubt they speak Hindi, but you feel as if he is talking in Odia, Odiaized Hindi, Odiatic Hindi. Anyway तरंग दैर्घ्य and आउ गोटे frequency हला आबृति आबृति माने
गोटे पूर्ण तरंग एठू आरंभ होला एठी सरला ये पूर्ण तरंग कि गोटे गोटे क्रेस्ट टू क्रेस्ट गोटे ट्रफ टू ट्रफ है पूर्ण तरंग तेणु गोटे पॉइंट बाट देकरी गोटे सेकेंड रे केतुटा पूर्ण तरंग जाउची क्रॉस करूची सेटा हला फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आउ ए दीटार गुणफल होची कांस्टेंट तारी ना होची वेलोसिटी ऑफ लाइट लाइट बोली हमें गेलारे कहू किंतु इट शुड बी वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ए जो सी टा कांस्टेंट 3 into 10 to the power 8 जो हमें कहूछु अप्रोक्सीमेटली एटा होची वेलोसिटी ऑफ लाइट ताको गेलारे हमें कहूछु सेटा होची प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पैरामीटर्स गोटे वेव रो लैम्बडा अछि सेटा होची तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति अछि ए आवृत्ति और तरंग दैर्घ्यर गुणफल होची सी कार मु कहूची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन राइट मु साउंड कथा कहूनी साउंड वेव तो बहुत स्लो कंपेयर्ड टू यू नो साउंड वेव ट्रांसमिशन करने पे गोटे माध्यम दरकार तो आई डोंट नो वेदर साउंड आई मीन वेव मोशन एंड साउंड पढ़ा कि नहीं पढ़ाई ना नहीं तुम 10th रे 9th रे पढ़थिलो बोलते 9th रे पढ़थिलो so it needs a medium but light and electromagnetic radiation they do not need any medium they may travel in a medium by which its speed will be changed but vacuum रे कोटी कोटी किलोमीटर दूरता को क्रॉस करी से सूर्य रु आसुची वैक्यूम जतिक अच्छी शून्य तार दूरताटा आमर जो एयर जो एटमोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर जो जो पर्यंत अच्छा लोक माने अच्छा माने सम कन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर से मानक ठारू बहुत अधिका दूरता होची शून्य से शून्य बाट देकरी ट्रैवल करि पारिबो ट्रांसमिशन करि पारिबो माध्यम बाट देकरी मध्य करि पारिबो किंतु शून्य रू जेकोसी गोटे अन्य माध्यम को जीव माने तार स्पीड कमी जीव स्लो डाउन हे जीव धीरे धीरे इंटेंसिटी भी कमी जीव तीव्रता भी कमी जीव राइट नाउ आमे देखिबा हमर बेसी समय नष्ट न करिकरी आमे परीक्षा ओरिएंटेड हबा एवं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी करिबा तो टॉकिंग अबाउट ए से कॉनकेव सपोजिंग आमे गोटे कॉनकेव मिरर नबा and those who have not studied in their schools or from their tutors they for them I am going to be little slow for them but for those who have already studied this for them it will be a revision now as I have told you there will be a focus where all the rays which are coming parallel this is called the principal axis this is called the pole moji point पोल जति बाट से जो जति कर्वेचर अच्छी तार मझी पॉइंट होची पोल से बाट देकरी गोटे जदि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिवो then that will be called the principal axis and एटा हला फोकस जोठी जतक पैरेलल रे जोडा को जिबे जोडा को सबु ए फोकस रे पड़िबे आमे पिला बेले कोन करू से ता ना हूँ फोकस आम गोटे कनकेव मिरर आणिकी गोटे पत्र पत्र ड्राई पत्र खरा दिन जलू आणिकी सूर्य आड़ को एमती रखिबू ओरिएंट करी डायरेक्शन करी से ठीक पत्र उपरे तार फोकसटा पड़ो तार फोकसटा पत्र उपरे सो दैट किसी समय पर रखिला पर एते जोर इंटेंसिटी बढ़ी जीवो से सनलाइट पत्र ऊपर पड़ुची जलुनी किंतु तीव्रता एते बढ़ी जीव सब गुड़ा करे एका संगे पड़ी कि गोटे जगार एते तीव्रता बढ़ी जीव से जलिबो आमको पार्टी करती आमर घरे कौन कल पत्र जलुच एटार फोकस फोकस रो डिस्टेंस होची फोकल लेंथ ए डिस्टेंस पोल रू फोकस एफ एटा होची फोकल लेंथ और तार ठीक एटा जदि एफ हुए तार ठीक आउट एफ रे एक्चुअली सेटा सी रेडियस एटा को जदि बढ़े दबो स्पीयर कर दबो ए ओटा हबो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर एटा होची रेडियस सो ओपी टा होची रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच इज इक्वल टू
तार मध्य मु डेरिवेशन दे देछि मु जो देबी तुमको मटेरियल से मटेरियल रे डेरिवेशन कर दिया है आर केमती आर इज इक्वल टू 2f एटा गुटे f दीटा f हैला गुटे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f हैला अच्छा आमी जो तो रे ट्रेसिंग डायग्राम करिबा टू फाइंड द इमेज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हमको गोटे जिंस देखिबा पड़िबो से एठी मध्य एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एठी मध्य स्फेरिकल सरफेस रे कर्व्ड सरफेस रे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कोठी चेंज होवार नाही काहे कि ना एई पॉइंट रे जदी गोटे टैंजेंट टाणिबो स्पर्शक एवं सेटा रेडियस आई मीन सॉरी सेंटर को से पॉइंट को टच करिवो एवं एक्सटेंड करिवो सेटा हबो अभिलंब एटा गोटे दीटा कथा कहली प्रथम कथा होची जो पॉइंट रे लाइट पड़िला एपटे तो पड़िले किछि हबनी यू नो रिफ्लेक्शन करके सेई पट को जीवो एटा तो सिल्वर कोटिंग हेची सेई सिल्वर कोटिंग सरफेस रे ही रिफ्लेक्शन होची आमे किंतु भाबुचु रिफ्लेक्शन टा होची प्रथम एते थिन जे वी कंसीडर दैट द रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग ऑन द शाइनी ग्लास सरफेस से जाहु आमे ए टेंजेंट ए पॉइंट रे जदी गोटे लंब करिबा एटा 90 डिग्री करिकि गोटे ड्रॉ करिबा देखिबो सेटा को एक्सटेंड कले सेटा ए ऑप्टिकल सेंटर को टच करिवो सो इन देखो ए जो एंगल टा में थीटा एग्जैक्टली ए एंगल टा मध्य थीटा जोठी जोठी ए पॉइंट रे धर स्पर्शक टाणिबो एठी लंब नबो एठी रेटा पड़िबो देखिबो एठी जदी जॉइन कर दबो यार सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर को ताहले एटा मध्य एटा 90 डिग्री हबो आको एक्सटेंड कर देले ये भी 90 डिग्री हबो सो दैट सो जो रेटा ऑप्टिकल सेंटर देकरी जीवो सेटा सीधा फेरी आसीबो जोठी जीवो सेठी फेरी आसीबो कारण एंगल जदी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जदी 90 डिग्री ना हैला किंतु अभिलंब सेई रे जदी सेई हबो तले आपतन कोण 0 प्रतिफलन कोण 0 से जीव सेई पटे फेरी आसीबो सो ए जोड़िए जिंस हेले तमर मिरर रे हे जीवो काम तो रे ट्रेसिंग डायग्राम करला बेलकू फोकस एटा सेंटर एटा बियॉन्ड सेंटर एटा आमे जदी रखिबा गोटे वस्तु को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस यूजुअली प्रिंसिपल एक्सिस रे रखा जाए गोटे वस्तु सेटा सीधा इरेक्ट रखा जाए तेणु ऑब्जेक्ट रो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव सेटा तळ तळ पटे रखा जाए बाय कन्वेंशन इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट the object length टाको पॉजिटिव निया जाए किंतु इमेज लेंथ कैन बी नेगेटिव इमेज टा जदी उल्टा पड़िबो ताले सेटा नेगेटिव निया जीवो कन्वेंशनली आ जदी सेही सळक पड़िबो ताले पॉजिटिव तो जदी गुटे ऑब्जेक्ट टाको आमे रखू बियॉन्ड सी तबे आमे केमित एटा हला गुटे कनकेव मिरर सो दैट आमे गुटे ट्रेस करिवा कोन ना सीधा जो सीधा जीव सी फोकस बाट देखि जीव डेफिनेटली सी फोकस बाट देखि जीव एक्सटेंड कर दबो गला बारी आ गोटे सेंटर ऑफ कर्वेचर देकरी तुमको छाड़िया पड़ियो जे कि सीधा जीव पीछे मुड़ तेज चाल से गोटे पॉइंट टॉप पॉइंट रो एठी पड़िला पुणी बैक कला पीछे मुड़ तेज चाल तेणु जो दीटा रे जोठी इंटरसेक्ट कला यही बिंदु रही जो तीर चिन्ह ये बिंदु धर मनीष तार मुंड उपरे धर एठी आयुष कांत रथ एठी अछंती ता मुंड एठी पड़ी गला जोठी दीटा रे इंटरसेक्ट कला तेणु एटा पड़ी गला तेणु एठू जदी ड्रॉप करबा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ऑटोमेटिकली एटार इमेज एटा हे जिवो तेणु गोटे पॉइंट को धर टॉप पॉइंट
रो इमेज को आमे ट्रेस कर देला परे सेठू we drop a perpendicular to the principal axis so that you get the image. So एटा हला image I ताको E बिली लिखा जाए. So image बु लिखु चाहिए एटा होची ऑब्जेक्ट O. तेणु एठू जानिले जदी ऑब्जेक्ट टा बियॉन्ड C रखा जाए तार इमेज टा इन्वर्टेड हबो. बियॉन्ड C जदी रहिबो ऑब्जेक्ट ताहले तार इमेज रो क्वालिटी कौन हबो ना इन्वर्टेड. उलटा एवं रियल वास्तव ताकू गोटे परदारे धरी पारिबा सेही जागारे परदा जदि पकेइबा ताले सेठी रियली सेटा पड़िबो वास्तव एवं छोट ऑब्जेक्ट थारु छोट स्मॉल इन साइज real inverted and definitely image length टा नेगेटिव होबो कारण inverted हैला माने image length टा नेगेटिव होबो. एटा पॉजिटिव हेले इमेज ऑब्जेक्ट रो हाइट टा जदि पॉजिटिव होबो HO सबु बळे पॉजिटिव किंतु एठी HE ई लिखा जाय इमेज को नेगेटिव कारण सेटा प्रिंसिपल एक्सिस रो तळे पडुची. सेमिति तुमे विभिन्न जगारे मु तुमको देखई दउची तुम टिके प्रैक्टिस करिवो. मु ऑलरेडी कहि साइलेनी एटा हला पोल एटा हला रेडियस ऑफ कर्वेचर एटा आर टा मु स्मॉल आर लिखिची एटी कैपिटल आर लिखिची. वक्रतार व्यासार्ध एटा सी रु एटा सेंटर ऑफ कर्वेचर हेउची एटा सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस ऑप्टिकल सेंटर मु भूल रे कहि दिले आई एम सॉरी आई विथड्रॉ. एटा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रतार केंद्र फोकस मु कहउथली एटा. सो आमे रे ट्रेसिंग डायग्राम आमे करि सारलेनी दी प्रकार रो इमेज थाए. गोटे होची आभासी गोटे रियल तमे जानिचो एवं रियल इमेज गुड़ा सबू इन्वर्टेड हम जेतक रियल इमेज सब इन्वर्टेड आ वर्चुअल इमेज सब इरेक्ट सड़क. देख रे ट्रेसिंग डायग्राम आमे कर सारे. आ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस हला जदि गोटे ऑब्जेक्ट गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर पड़िबो. धर ऑब्जेक्ट एठी अछि ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट अछि ओ तार इमेज टा मध्य सेही प्रिंसिपल एक्सिस रे पड़िबो. कोठी पड़िबो रे ट्रेसिंग डायग्राम कोले जाना पड़िबो. कोन ना गोटे नै जाओ जे कोनसी गोटे रे नै जाओ तार जदि एई सेंटर बाटो देखरी एटा एथिटा हबो तार सेतिकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे से फेरिबो. मन इच्छा मु फेरि देली सेमति किछि मु जॉइन करिनी एकदम थीटा करनी से गला माने फेरिला. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस करके हम जानि सारलेनी टेंजेंट काटिबा सेही पॉइंट रे जदि जॉइन कर दबा सी को रेडियस ऑफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ताले सेटा हबो परपेंडिकुलर हैला. आउ गोटे सेंटर ऑफ कर्वेचर बाटो देकरी गला सेही पॉइंट रु गला सेही बाट रे फेरला गला जो बाट रे फेरला सेही बाट रे ता माने सेही क्रॉस करची. एई पॉइंट टा मु आउथरे हाइलाइट करची गला आसिला. एईटा गोटे रे आउ गोटे रे जोड़िए रे जोठी क्रॉस करिवे इंटरसेक्ट करिवे सेटा उस तार सही पॉइंट रो रिफ्लेक्शन इमेज प्रतिबिंब इमेज पॉइंट. तेणु आमर प्रिंसिपल हला गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट अच्छी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर तार इमेज मध्य सही प्रिंसिपल एक्सिस रे पड़िबो. अच्छा देखो एटा को सब तुम टिके प्रैक्टिस करिवो आउ समय नष्ट करिवार किसी कारण नाही. मु मझिरे मझिरे तुमको पचारिबी जदि गोटे वस्तुटी इनफाइनाइट डिस्टेंस रे अछि एटा गोटे फाइनाइट डिस्टेंस रे देखैछि मने मने भाबा इनफाइनाइट डिस्टेंस रे सेटा आउ प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर ठिया होबनी सी पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस रे अछि पूरा मूलरु शेष जाके अछि. तेणु ता देहरु सबु जागरु पैरेलल रेज आसीबो
इनफाइनाइट डिस्टेंस रु सब गुड़ाक पैरेलल रेज आसे आसिले सब गुड़ाक रेज रिफ्लेक्ट हला परे से आसिकरी जुटिबे कोठी फोकस रे तेणु यार प्रतिबिंब पड़िबो पॉइंट प्रतिबिंबर क्वालिटी हला एटा बिंदु प्रतिबिंब एडे बड़ जिनसटा इनफाइनाइट डिस्टेंस रे अछि सेटा बिंदु प्रतिबिंब कोठी पड़िबो ना फोकस रे किंतु प्रकृत रे जदि एटा इनफाइनाइट डिस्टेंस रे न रही बहुत दूर रे रही बट ए सी रु सेंटर ऑफ कर्वेचर रु बहुत दूर रे रही किंतु सीमा अंतर्गत जदि रहिबो ताहले प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखिबो एवं सेटा कोठी पड़िबो सेटा एठी जानि परिबो जोटा हमें ऑलरेडी करिकरी मु तुमको रे डायग्राम रे ट्रेसिंग डायग्राम तुमको बुझौथिली so any point any place beyond the center of curvature वक्रता जो अछि भाषा तो खोजमो ताको कोन कहते सेंटर ऑफ कर्वेचर ओडिया सेंटर ऑफ कर्वेचर होची वक्रतार केंद्र वक्रतार केंद्र ए जो कहउथिली तो वक्रतार केंद्र एटा सो गोटे रे पैरेलल करिवो विथ प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल करिवो एवं सेटा निश्चय फोकस बाट दिकी जीवो आ गोटे सेंटर ऑफ कर्वेचर देकरी पास करिवो सेटा सेही पीछे मुड़ तेज चाल माड़ हबो सेठी फेरिवो कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हेले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मध्य जीरो तो सेटा इंटरसेक्ट करछि एठी एवं एटा जदी ए मुंड पॉइंट हला तेनु ताकू सेठू जदी ड्रॉप करिवो गोटे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस सेटा हबो एंटायर ए बी जो एटा ऑब्जेक्ट तार एंटायर प्रतिबिंब होची एटा एटा वास्तव क्षुद्र एवं ओलटा तेणु से कहली जदि इनफाइनाइट डिस्टेंस रे न रही दूरतार रहिला किंतु सीमित दूरतार रहिला सीमा अंतर्गत रहिला तेबे डेफिनेटली फोकस पाखरे पड़िबो नियर सेंटर और फोकस भितरे पड़िबो किंतु जते दूर रे रहइबो सेते फोकस पाखा पाखी पड़िबो सेई जो एटा तार टिके हबो पॉइंट इमेज न होइकरी कुनी इमेज हबो जेते दूर को जीवो सेते कुनी कुनी हबो सतरे जदि इनफाइनाइट डिस्टेंस को जीवो एकदम पूरा पॉइंट इमेज ता हबो पॉइंट गोटे पॉइंट सो यार किसी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस नाही इनफाइनाइट डिस्टेंस कोन सतरे रे आसीबो से पॉइंट हबो सेटा गोटे काल्पनिक आमे एक्चुअली जेतिक दूरतारे से आसिले लाइट तादरे पड़िबो आमे कोठी रखिचे हम लैबोरेटरी रखिचे तो लैबोरेटरी बाहर को सीधा रे गले रगिले ताले हम एक्सपेक्ट करबा गोटे रियल इमेज टा फोकस पाखरे इन्वर्टेड हेकि पडुची बहुत कुन्नी अच्छा जदी आमे पूरा सेंटर ऊपर रखिबा सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिबा तबे आमे सेही रे डायग्राम जदी करबा दीटा गोटे सीधा जीवो पैरेलल सेटा फोकस बाट दे जीवो आ गोटे आमे कोन करबा ना ए पॉइंट आ गोटे कथा मु कहबा को भूली गले रे डायग्राम रे गोटे कथा मु कहबा को भूली गले मु सेठी लिखि दउची सेटा मध्य दरकार पड़िबो सेटा मध्य बेले बेले रे ट्रेसिंग रे दरकार पड़िबो एठी जेमति दरकार पड़िला मु टिके कर दउची एटा जदी हेला कॉन्केव कारण मिरर स्फेरिकल मिरर रे हीरो होउची कॉन्केव स्फेरिकल लेंस रे हीरो होउची कन्वेक्स तार बहुत प्रकार वेरिएशन अछि किंतु मिरर रो कन्वेक्स रे किछि वेरिएशन नाही गोटिए जोठी थिले भी गोटिए प्रकार रो वर्चुअल इमेज हबो म कहबी सेमती कॉन्केव लेंस रे मध्य अवस्था सेया लेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिफ्रैक्शन फेनोमेनन इज वेरी इंटरेस्टिंग सेठी बेसी तुमको ट्रिक करिया पाई एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर विल ट्राई देखो once you understand the logic तुम भूल हवार चांस बहुत कम नाउ गोटे गोटे जिनस हला जदि फोकस बाट देकरी पास करिवो पैरेलल पास कले फोकस बाट देकी जीवो किंतु फोकस देकी जदि पास करिवो त से पैरेलल आसीबो उल्टाटा त माने एपोटू गले एटी जाई थांता जदि फोकस बाट दे जीवो ताले रिफ्लेक्शन हला परे तर एटा सी प्रति टाणले एटा थीटा हला एटा भी थीटा से जीवो पैरेलल गले फोकस
फोकस बाट दे गले पैरेलल तो सेही जिनसटा एठी व्यवहार करा गला बंधुगण एठी गोटे रे फोकस बाट दे गला पैरेलल आसिला एवं ए दीटा को जो रश्मि जो इंटरसेक्ट कले सेटा एग्जैक्टली पड़िला सी रे ताको ड्रॉप कले यू विल गेट द इमेज व्हिच इज रियल वास्तव ओलटा एवं एका समान आकार विशिष्ट तेणु जदि गोटे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर ठिया हबो देन तार इमेज हबो रियल ओटा को सब रियल इमेज आउ ओलटा एवं समान आकार विशिष्ट अच्छा बाय द वे टिके रेज योर हैंड्स हु आर अंडरस्टैंडिंग मु मजरे मजरे स्लाइड यूज करूची प्रिंसिपल कहला परे यू नो रे ट्रेसिंग डायग्राम रो थर्ड टा मु कहि नथिली भूली जाइतिनी गोटे होची पैरेलल गले फोकस बाट देके आसीबो आ गोटे सेंटर ऑफ कर्वेचर देके जदी पास करिवो ताले से बैक टू पैविलियन पीछे मुड़ तेज चल आउ जदी फोकस देके जीवो तेबे सेटा बाहर लाडू को पैरेलल ही बारिवो तीनटा रु जे कोनोसी दीटा यूज करि परिवो तीनटा जाको यूज करि परिवो भी काहे बेकार तीनटा यूज करि परिबा जोठी दीटा रे जीवो तीनटा रे गले भी सेठी इंटरसेक्ट करिवो बेकार काहे क्लमजी करिबा अच्छा जदी ऑब्जेक्टटा अरे मु पचारथिली पूरा क्वेश्चन टा को माने बुझी पारुछो हाथ टिक आउथरे हाथ टिक मु देखे टिके लेट मी गेट अ फील आसु आसु चिन्मय पंडा साई युवराज कौन तुम युवराज तुम्हें गोटे कौन किस है तुमको सेठी गले बरहमपुर गले मु जेतेबेले जाए मु कौन चंदन ना की रेस्टोरेंट चंदन नो सबुठू ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट कौन सेटा ता नाटा होटल नंदन 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 चंदन कहूँ नंदन रेस्टोरेंट मु निश्चय जीवी जाइकरी सेठी अवश्य आजिकली रास्ता घाट रे मध्य बढ़िया बढ़िया सब मिललानी किंतु मते चंदन नंदन रेस्टोरेंट रे खाइबा भल लागे डोसा खाइबी इडली खाइबी बड़ा खाइबी कारण सेठी कौन बाय वन गेट वन फ्री जेते चटनी सांबर हबो आम आड़े टिके कुंथेइबे सेमानकर कौन ताकर केमिति से माने एते फी दियंती मु बुझी पारे एनीवे जदी ऑब्जेक्टटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस भितर रहिला तुमे निजे घरे आज प्रैक्टिस करिवो जदी जो माने करिचो गोटे पैरेलल से चलला फोकस बाट देकरी ताको वर्धित कर दियो आ गोटे एठी सुंदर भाबर तमे नहीं पारिबो कोठी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर बाट देकी नहीं पारिबो सीधा गला माडो खाइकरी पुणी बैक टू पैविलियन ताको वर्धित करो सी टच कला एठी दूर रे बियॉन्ड सी रे टच कला एवं एठू ड्रॉप करो परपेंडिकुलर तो तार नेचर हला सेई रियल वास्तव किंतु परिवर्धित एनलार्ज्ड एवं पड़िला बियॉन्ड सी ओलटा वास्तव तुम करदब सब किछि तुमको असुविधा हबनी किंबा तमे जदी कहिथा तो नाइ सर मु एटा नेबिनी तमे एठू गोटे रे नै करी एठी फोकस बाट नै करी एठी पैरेलल कले सेठी एका हबो खाली क्लमजी करिवा कथा तुमे एठू नै करी एई फोकस बाट देकरी पास कले एटा एठी पड़िबो एवं पैरेलल बाहरिबो सेटा मध्य एठी पड़िबो तो जेकोसी दीटा नवा कथा हमें तीनटा नै करी क्लमजी करिया दरकार नै अच्छा जदी फोकस ऊपर ऑब्जेक्टटा ठिया हला जदी ठिया हला ताहले कौन हबो एठी टिके ट्रिक अछि गोटे रश्मि गला सीधा से फोकस बाट देकी ठिया आइछि फोकस ऊपर किंतु मु टॉप टाकू नउछि टॉप टाकू आमे सब बेले नउ नेला से फोकस तार तळ बाट देकी चली गला आ गोटे रेडियस ऑफ कर्वेचर बाट दे गला पुणी बैक टू पैविलियन पळेला ये दीटा को पैरेलल ये दीटा को पैरेलल ये दीटा को पैरेलल
तेणु एमाने जाइकरी भेटिबे इनफाइनाइट डिस्टेंस रे अनंत दूरतारे भेटिबे आमे वर्चुअली भेटिबे नहीं तेणु आमे जदि एमिति थियोरेटिकली एक्सप्लेन करिबा तार इमेज रो कोन क्वालिटी आमे कहबा वास्तव भेटंतु जोउठी एवं अनंत परिवर्धित इनफाइनाइटली लार्ज तार अर्थ किछि नाही या किए ताकू धरिबो पर्दा इनफाइनाइटली लार्ज हवा दरकार ना कि देखिबो ओलोटा प्रिंसिपल एक्सिस रो तळे माने ओलोटा आउ वास्तव किंतु रियलिटी केस रे when the reflected rays fall on the eye they appear to come जदि एठी तमे चाहिबो परदा न पके से आस्पर्धा न करी एई प्रिंसिपल एक्सिस टिके तळुकु पळेबो टिके तळी हे करी चाहिबो तुमको लागिबो as if the rays they appear to come from a point माने गोटे virtual image देखिबो coming from a point माने points behind the mirror above the principal axis रे ठिया आइचंती बहुत दूररू तमे जानि परियो से डिस्टेंस नापी परिबोनी से लागिबो as if the rays are coming तारो इमेज गोटे तमे वर्चुअल इमेज देखिबो इरेक्ट वर्चुअल इमेज आभासी वर्चुअल इमेज आउ इरेक्ट देखिबो तुमे जदि एपटे चाहिबो मिरर आडकू चाहिबो किंतु जदि रियल इमेज कथा भाबिबो सेटा नाम के वास्ते काम के वास्ते नुए रियल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस रे पड़िबो सेठी कोन धरिबो तम हां तुमे जदि गोटे पाखरे गोटे पर्दा पके दबो से गोटे ब्लरिंग देखा जिवो कारण सेटा सब पॉइंट मिसी नथिबो अल्प किछि थिबो गोटे ब्लड गोटे कोन गोटे इमेज पाइ जिवो इट इज नॉट द इमेज ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट इमेज जाइक इनफाइनाइट डिस्टेंस रे पाइबो बट एठी जदि तमे आखि देखिबो ताले से इमेज टाकू तमे वर्चुअल बिहाइंड द मिरर देखि पारिबो सो एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस प्रैक्टिकल जिंस एटा होची थियोरेटिकल जिंस एटा प्रैक्टिकल जिंस आउ जदि एठी आसिला जदि ऑब्जेक्टटा फोकस एवं पोल भितर रखिबो क्लोज टू द पोल फोकस और पोल भितर रहिले एका जिंस करिबो गोटे जीव पैरेलल से फोकस बाट दे गला आउ गोटे गला थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर दे बैक टू पैविलियन तेणु एटा तो हमर मिरर पटे केबे इंटरसेक्ट करिवे नै इंटरसेक्ट करबा को हेले तमे ताको पछु को बढ़ेबा को पड़िबो सो पछु को बढ़ेले यार इमेज टा एई पॉइंट रो टॉप पॉइंट रो इमेज टा एठी देखा जिवो जोठी टच दीटा को लाइन जोठी छेद करिवे तो जदि मिरर रो पछपटे देखा गला एपटे चाहि कि तुम देखिबो सेटा हला वर्चुअल आभासी एवं ताकू ड्रॉप करिवो परपेंडिकुलर तो एंटायर पेंसिल रो इमेज टा देखा जिवो ताकू परदारे धरि पारिबोनी तुम एई पटे देखिले तुम देखिबो पछपटे गोटे वर्चुअल इमेज परिवर्धित एनलार्ज्ड सळख इरेक्ट सो एई गोटाक खाली रहिला तमु जानिले वर्चुअल इमेज गुडाक सब इरेक्ट आ रियल वास्तव इमेज गुडाक सब इन्वर्टेड एटा जानिले आउ एटा जो कन्वेक्स मिरर टा एते हीरो नुए एठी तमे जोठी रख कन्वेक्स मिरर एटी कनकेव पटे सिल्वरिंग करा जायछि कन्वेक्स पटटा साइनी अछि इमेज टाकू सबु बेले हमें बाँ पटे सॉरी ऑब्जेक्ट टाकू सबु बेले हमें बाँ पटे रखिबा सबु बेले बाय कन्वेंशन सेमती कोन उल्टी कि रखिले हबनी कन्वेंशन फिजिक्स रो कन्वेंशन अनुसार तमे ऑब्जेक्ट टाकू बाँ पटे रखिबा रखिले जोठी रख ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी केवल the image will be at the focus the infinite distance रहिबो ताहले यार गुटे वर्चुअल फोकस अछि it appears to have come because एठु गला एठी रिफ्लेक्ट कला एवं एठी जदि टेंजेंट काटिबा ए जो परपेंडिकुलर हबो से परपेंडिकुलर को जदि एक्सटेंड करिबा से आरो पटे सेंटर ऑफ कर्वेचर को से छोइबो तार सेंटर ऑफ कर्वेचर ता आरो पटे तार वर्चुअल फोकस ता आरो पटे एठी फोकस एक्चुअली हबनी as if सेठू आसुच रेटा पैरेलल गले जो रिफ्लेक्टेड हबो ताको परिवर्धित कले से फोकस
फोकस को टच करिवो तेणु अजीब से फोकस रु आसुची बोली लागिवो किंतु फोकस टा हला वर्चुअल फोकस आभासी फोकस सेठी रियल फोकस एठी पड़िबो एठी पड़िबोनी सेठू बाहरु थिला भली लागिवो तुमको it will appear as if the ray is coming from focus right तो आउ गोटे नब कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर देकरी दी जीवो एटा सब आभासी माने एटा भीतर को जाई परिबोनी तेणु सेही डायरेक्शन रे तमे रेटा काटिबो पुनी बैक टू पैविलियन तमे जानिचो से कन्वेक्स हो वर्तमान कन्वेक्स बा उत्तल उत्तल दर्पण कथा भाबुचे कन्वेक्स कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर उत्तल अवतल कथा सरला तेणु जहाँ भी हो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन रे जदि जीव ताले पीछे मुड़ तेज चाल हैला तेणु वर्तमान एई रिफ्लेक्टेड जोटा पैरेलल जाइतिला एवं एई रिफ्लेक्टेड बैक टू पैविलियन एमाने एपट साइड रे मिरर साइड रे मिसिबेनी ताकू परिवर्तित करिया पड़ियो मिरर अपोजिट साइड को तेणु से जे मिसिबे सेटा जदि हेला टॉप पॉइंट टा ड्रॉप करिवो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर तार प्रॉपर्टीज हबो कोन कुनी छोट क्षुद्र सड़ख एवं वर्चुअल बा आभासी तो जोठी रखिबो सर्वदा पी एंड एफ मध्य रे दर्पण रो पछपटे पड़िबो तमरो कोन ना इमेज टा सब बेले पड़िबो बिटवीन पोल एंड फोकस जोठी रख केवल इनफाइनाइट डिस्टेंस रखिले फोकस ऊपर पड़िला भलिया लागिबो फोकस ऊपर माने ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट फोकस माने वर्चुअल फोकस वर्चुअल इमेज but it will be a point image virtual image and falling on the virtual focus तो सेति पई एई कन्वेक्स मिरर टा सेते इंपोर्टेंट नुहे काहे ना तार जोठी रख अदर देन इन्फिनिटी ए पड़िबो निश्चय पोल और फोकस भितरे एवं तार प्रॉपर्टी एका रहइबो कुनी इरेक्ट सड़ख एवं वर्चुअल आभासी ताकू परदारे धरी पारिबनी खाली देखिबो एपट थाई कि देखिबो तेणु आमे गुटे कंक्लूजन कले वास्तव जो रियल इमेज पाइला माने से उल्टा जदि आभासी इमेज रहिबो सेटा कनकेव लेंस हो सॉरी कनकेव मिरर हो गोटे पॉइंट रे जदि फोकस और पोल भितरे रहिला ता सेटा हेले जाईकरी वर्चुअल इमेज हबो एवं सेटा सब बेले इरेक्ट हबो सळख आउ कन्वेक्स मिरर रे सब बेले कन्वेक्स मिरर रे सब बेले इरेक्ट एंड वर्चुअल किंतु कनकेव मिरर रे गोटे कंडीशन रे सेटा इरेक्ट एंड वर्चुअल बट नॉट कुनी एनलार्ज्ड जते बेले रहिबो कनकेव मिरर रो पोल रु फोकस भितरे जदि ऑब्जेक्ट रहिबो ताहले तार इमेज टा एनलार्ज्ड हबो वर्चुअल हबो एंड सळख हबो इरेक्ट नाउ कमिंग टू एबे अंक करबा टिके अंकटा गोटे बुझिले थरे बुझी गले लाइट टा मन रख लाइट टा सब बेले आसीबो इंसिडेंट हबो बाँ रु डाण ऑब्जेक्ट सब बेले बाँ पटे रहिबो से कनकेव रो साइनी फेस हो कि कन्वेक्स रो साइनी फेस टा बाय रूल आमे ऑब्जेक्ट को फेस करिया पड़िबो जोटा बाँ पटे अछि तेणु बाँ पट डायरेक्शन रु जदि रे जाउची से डायरेक्शन तमाने मिरर साइनी सरफेस रो जोटा पूर्वरु रहिला से लेंथ गुडा को सब नेगेटिव ताकू कहते अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे जोंती जाउची सीधा पळे तोर पळी थांता पळुनी रिफ्लेक्शन होची तार अपोजिट डायरेक्शन तार अर्थ होची साइनी फेस रो पटे जदी कोनोसी जिंस रहिला फोकल लेंथ किंबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गुडा को सब नेगेटिव जदि आर पटे रहिला वर्चुअल हेगिरी आर पटे रहिला कोनोसी जिंस फोकस हो कि जा भी हो फोकस कार ना कन्वेक्स रो गुडा को सब पॉजिटिव सेठी लिखा आइची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा यू ए चित्रटा करा आइची ऑब्जेक्ट टा सब बेले से कन्वेक्स हो कि कनकेव हो बाँ पटे रहिबो एवं जेहेतु रे डायरेक्शन पटे रहुची
एक्चुअली बुझिबा को हेले साइनी सरफेस रो पटे रहउची ताको सब नेगेटिव एंड एटा हला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u pb टा होची u u गुटे काई देइचंदी u टा गुटे वेलोसिटी साइन दिया जाय किंतु डिस्टेंस ने आ जाय डोंट बी कंफ्यूज्ड u इज डिस्टेंस माने ऑब्जेक्ट जोठी अछि तार तळटा आउ पोल विथ डिस्टेंस होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तोर इमेज टा एठी पडला हमें आगुरु जानिछु जदी बियॉन्ड सी पडला ताले इमेज पडिबो बिटवीन सी एंड एफ इन्वर्टेड पडला सो इटा ए जो डिस्टेंस टा फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस ए केस रे सेटा भी नेगेटिव कारण सेटा भी साइनी सरफेस रो पटे अछि नेगेटिव से पटे पड़ता पॉजिटिव सो कॉनकेव केस रे यू टा सब बेले नेगेटिव कन्वेक्स रे भी नेगेटिव सब बेले यू टा नेगेटिव कारण यू टा रहिबो साइनी सरफेस रो पटे एफ टा रहिबो कॉनकेव कॉनकेव मिरर रे एफ टा भी नेगेटिव सेटा साइनी सरफेस पटे रहिबो आर आर टा सब आर टा मध्य नेगेटिव कार कॉनकेव रो एटी आर टा होची एटा सेंटर ऑफ कर्वेचर रु एटी एटा एटा होची आर सब आर टा होची नेगेटिव किंतु ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा नेगेटिव हबो सब बेले एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी सेते बेले इमेज टा वर्चुअल हे करी आर पटु को पळेइबो अदर साइड ऑफ द साइनी सरफेस सेते बेले पॉजिटिव हबो अदरवाइज v टा सब बेले नेगेटिव हबो एठी रहिले किंतु एठी रहिला माने इमेज टा पडिलानी कोठी ना सेपटे बिहाइंड द मिरर सेते बेले सेटा हे जीवो पॉजिटिव तो मन रखो साइनी सरफेस रो पटे रहिले नेगेटिव साइनी सरफेस रो ऑपोजिट पटे रहिले पॉजिटिव किंतु एटा हला एटा एटा मु एक्चुअली मु कॉटन कॉपी पेस्ट करिछि किंतु एमति देखिबा कथा नुहे मोर कारण मु कहूची सब बेले जे साइनी फेस टाकू आमे लेफ्ट रे रखिबा सो दैट ऑब्जेक्ट सब बेले लेफ्ट रहइबो एठी उल्टा कर देलेनी गोटे पाइली नहीं आसली किंतु एमती करबा कथा मोर मोर एमती करबा कथा एमिति करबा कथा एइटाकू आमे सॉरी पछपटटाकू आमे मिररिंग करबा सो दैट ऊपर पटटा कन्वेक्स पटटा साइनी तेणु एठी ऑब्जेक्ट रहिला ए ऑब्जेक्ट एटा है यू एटा सब बेले नेगेटिव साइनी पटे रहिला किंतु फोकस टा रहिलानी कोठी ना एटा एटा हेले एटु एटु पळेइबो इट विल अपीयर थ्रू एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस सो एठू आर पटे रहिला माने फोकल लेंथ एटा जो एफ एफ टा फोकल लेंथ एटा हला पॉजिटिव आउ इमेज सब बेले पडिबो आर पटे मु कहूची मो चित्र रे एटा मु गोटे कोठू कॉपी पेस्ट करछि इमेज सब बेले पोल आउ फोकस भितर पड़िबो तेणु सेटा सब बेले पॉजिटिव एटा आउ यू टा सब बेले नेगेटिव कारण यू टा सब बेले एठी रखा जीवो साइनी सरफेस रो पट्टे रखा जीवो एफ टा पॉजिटिव v टा पॉजिटिव आर टा तो एठी रहिलानी आर टा ए कर्वेचर टा एमती ना तेणु आर टा रहिलानी एटा तेणु आर टा पॉजिटिव एफ टा पॉजिटिव आउ v टा पॉजिटिव केवल u टा नेगेटिव कन्वेक्स मिरर रो चलो अंक करिबा हाँ मिरर इक्वेशन टा लिखि दियो एटा टिके लिखि दियो खाता रे मु टिके एठी जेहेतु अंक करेबी 10-15 मिनिट सरी जीवो पळेबा पळेकरी मु टिके गाधेइबी टिके ठंडा ही गले टिके बढ़िया लगे गरम दिन ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए गाना आए या ना आए गाना चाहिए हार्डली पॉपुलेशन रो मे बी 5% मत भाबुची मु जो माने दे आर एलर्जिक टू म्यूजिक माने तांको गोटे गीत बाजिला माने से माने बंद कर देबे दे आर एलर्जिक एक्चुअली किंतु रेस्ट ऑफ द 95% पॉपुलेशन दे लव म्यूजिक they may not sing, they may not play a musical instrument, they may not dance, but they like to observe, to watch, to listen. So sethipai 95% ru maybe 94 point something percent are singers, but in between bracket wote rakha jibo ke koi paribo in between bracket kon rakhiba all are singers except those who have taken the training to sing with proper notes, proper
बेले बेले टिके आमे डेयर डेविल हेकरी किछि न जानथिबे भी चले दउ नोट्स विषय सारेगामापा विषय किसी ज्ञान नथिले भी आमे कौन करू ना डेयर डेविल हेकरी चले दउ कि देखुछि आमे भी एनकरेज करू गा परवर्ती काल रे आमे फील करू नाही आमे बेसुरा गाउछु समस्ते कहउछु केही लोक कहबे ने बढ़िया बढ़िया कहबे किंतु केही गोटे लोक कहबे जे टिके शिखुन बढ़िया तो गाउছো तमर टोन टा बढ़िया अछि तमे शिखुन टिके तबे हमर इच्छा हबो हाँ मु कौन कहूली जो ब्रैकेट रे जोटा कहूँ ऑल आर सिंगर्स अदर देन दोज हु आर ट्रेन्ड ऑल आर सिंगर्स ब्रैकेट रे यस शुभम शुभम पाणिग्राही पायोजा Sir, brackets means bathroom singer. यस बाथरूम समस्ते बाथरूम सिंगर माने बाथरूम माने प्रकृति रे कोन बाथरूम रे भी आमे गुणगुणौ घरे मध्य केही नथिले आमे गुणगुणौ बढ़िया हुए मु बेले बेले बाथरूम सिंगर मानकर लुचिकी शुणे मैंने भल गाँती मु जेमती पाखक आसीजे गला तो गला छानिया पशिला सी जहाँ बोलुले सब भूलभाल हो तेणु ना से लाचेबे ना ना मु बोलिबनी भारी फुले अच्छा एत है टिके लिखिदबा कनकेवटा मिरर हीरो हीरो तेणु एटा फोकस एटा सेंटर तर एठी गोटे मु रखिली ऑब्जेक्ट सो ए डिस्टेंस टा होची यू यू टा होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एटा सब बेले नेगेटिव मु कहि देबी नेगेटिव पॉजिटिव काहा को कहंती कहि देबी आ एटा हला फोकल लेंथ एफ एटा मध्य एटा एटा लिख दियो कनकेव मिरर अवतल दर्पण फोकल लेंथ मध्य सब बेले नेगेटिव कोठी कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब बेले नेगेटिव आउ एटा इमेज धर एठी पड़िला मु गोटे करी देखि देखे दोची एठी देकरी एठी एठी गला आउ सी बाट दे गला जो करथिले म कोन गला आ गला करिकी फेरला एठी इमेज आ गोटे कलर कर देले भलो हबो आ गोटे कलर कर देले इंप्रेसिव देखा जी बेटा इमेज बोली एटा धर इमेज तो ये जो डिस्टेंस टा एटा होची v v होची इमेज डिस्टेंस एटा सब बळे एठी नेगेटिव एक्सेप्ट when object lies between f and p focus and pole भितरे रहिले इमेज डिस्टेंस टा पॉजिटिव हो आर पटे मु तो जनरल डाकी देबी एटी जनरल हला कोन जदी यू एफ आर ए तीन टा तो डिस्टेंस हो कोन हाँ ये आर टा लिखे बोली आर टा मध्य एटा होची रेडियस ऑफ कर्वेचर जोटा एटा इट इज ऑलवेज नेगेटिव हियर in concave u f v r ये जो तीनटा चारटा डिस्टेंस अच्छी becomes negative when मु लिखुची they lie on the same side of the shiny surface of the mirror मिरर गोटे शाइनी सरफेस अच्छी आ गोटे कोटेड सरफेस अच्छी से जो कोटेड सरफेस एठू एक्चुअली रिफ्लेक्शन होची किंतु शाइनी सरफेस बाट देकी जाउची रिफ्लेक्शन होची शाइनी सरफेस पटे रहिले नेगेटिव आमे किंतु बहिरे लेखु कोन जो डायरेक्शन रे लाइट इंसिडेंट लाइट रहउची सेही डायरेक्शन रे तार टिके कंफ्यूजिंग टिके हुए सेटा रियली कंफ्यूजिंग हुए आउ पॉजिटिव केतल हबो व्हेन दे लाई ऑन दी
opposite side of the shiny surface ता माने coated surface रे of the shiny surface से कहउछन्ती सेम डायरेक्शन रहिले पॉजिटिव opposite direction रहिले पॉजिटिव से टिके कंफ्यूजिंग करे मिरर ते लाइट ता तो जाउनी से आडू ना पळे आसुची पळे आसला पर तो जो डायरेक्शन रे जाउची सेठी इमेज ता सेठी पडुची कंफ्यूजिंग टिके होनी पळे आसले जो पडुची से डायरेक्शन रे इमेज ता पडुची तो कोन अर्थ तो एटा बुझिबा भलो एंड कन्वेक्स लेंस रे सेमती लेखिबा एई पटटाकू करिबा सिल्वरिंग एटा करथिले कोन एटाकू आरो पटटाकू कन्वेक्स पार्ट टाकू मिररिंग इमेज सॉरी मिररिंग सॉरी सिल्वरिंग करथिले फेन कनकेव टा साइनी आ एठी कन्वेक्स लेंस रे कनकेव आरो पटटाकू आमे सिल्वरिंग करिबा कन्वेक्स पोर्शन इज साइनी तो एठी प्रिंसिपल एक्सिस यार फोकस होच वर्चुअल एठी appear to come एठी हले एमती जीवो इट विल appear to have come from focus so एटा वर्चुअल फोकस एपट रहउची and a radius of curvature c टा एपट रहउची so एटा f एटा r आउ सबु बळे आमे जे कोनोसी जागा रे नबा ताले आमे जानिचे सेटा पैरेलल नबा सेटा ए बाटे देखि जीवो आउ गोटे आमे जदी हेमती नबा माने एक्सटेंड करिकरी पुनी पीछे मुड़ तेज चाल तो आकु जे एक्सटेंड करिवा ताले से एठी हबो एंड एटा गोटे नालिया कर देले भलो हबो सबु बेले सबु सर्वदा बंधुगण अरे कोन एमती हला म तो गोटे के चेंज करिवे एठी इमेज पड़ला तो इमेज ता सबु बेले तो एठी कोन हबो यू सबु बेले नेगेटिव कारण एटा लेफ्ट रे अछि साइनी सरफेस पटे यू टा सबु बेले नेगेटिव से कन्वेक्स हो कि कनकेव हो किंतु एठी v टा सबु बेले पॉजिटिव एपटे पड़िबो आ r टा सबु बेले पॉजिटिव से एपटे अछि एवं फोकल लेंथ टा मध्य पॉजिटिव एपटे अछि एटा केवल u टा नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एटा लिखि चलणी हेलो लिखि चलणी अनिशा बेहरा नमस्कार अनिशा बेहरा आउ अनिशा बेहरा कौन लिखिसंती गोटे कौन लिखिसंती हाय 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 कौन गोटे किए अछ ना मु एसएस त्रिपाठी मु सुधांशु शेखर त्रिपाठी मु दी यूरानियम संघर मुख्य मु एकदा रेवेन्शा यूनिवर्सिटी सेतेबेले थिला कॉलेज सेतेबेले सेठी अध्यापना करूथली सेठी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री थिली किंतु 2002 मसिया रु मु वॉलंटरी रिटायरमेंट नै दी यूरानियम बोली गोटे संघ गठन करा गला किछि मोर लाइक माइंडेड पर्सन प्रोफेसर्स माने से माने मो संगरे मिसिले मिसिकरी हमें ओडिया माध्यम पिला मानकर साइंस रो एजुकेशन रो क्वालिटी टाकू इंप्रूव करबा पई हमें स्वल्प मात्रा जेतिकी चेष्टा प्रचेष्टा आज पर्यंत जारी रखिछु जानले तो अनिशा मैडम हमर परिचय हला सेया किए अच्छ जो कही तार उत्तर मु देबी हाँ बाय द वे आमे लेंस सॉरी मिरर इक्वेशन टा कौन तार भी डेरिवेशन मु कर देछि तमे जानि परिबो जे ज्योमेट्री सिखिछ से जानि परिबो मिरर इक्वेशन होछि 1/u + 1/v = 1/f तो आगो v टा लिखबाटा बेटर कारण सेठी मध्य v आसीबो तो सो 1/v + 1/u = 1/f 1 by image distance plus 1 by object distance is equal to 1 by focal length and sign convention जहा दबाकू तुमको पड़िबो ऑलरेडी आमे जानि सल्लणी चलो गोटे अंक करबा लिखि सल्लणी अरे लिखि सल्लणी स्वागत जणाउची जो माने यूट्यूब रु देखुचंती से मानकू मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं स्वागत जणाउची आ आपण माने एनकरेज करूथुवारु मु निजे को धन्य मन करूची आउ जदी
सब्सक्रिप्शन पुणी से कथा मनुष्यर प्रकृति मल्ले तुटिबो some people say that when Vivekanand realized, got the enlightenment, realized, he had a feeling that the nature of human being will not be transformed. It will remain as such. It will be subdued, but it will remain as such. I don't know whether it is from the voice of the great Vivekanand, or it is a fake information. I don't know. So, but the fact stands, it's extremely difficult to kill the nature or to transform the nature of human being. जे जेमती प्रकृतिर किंतु करी हबो बहुत परिमाण रे करी हबो जोटा बुद्ध हमको सिखैतले अच्छा वर्तमान कहीं केटा कहली ये जो कहतली बेपार कथा सब्सक्राइब करिया जदि नथिबो कर दबो एटा गोटे कहतली कोन करिया ए अंकटा हां आ गोटे लेख m इज इक्वल टू h by h h माने इमेज टा को हमें e लेखु केते बढ़िला बहुत परिवर्तित केते हला किबा छोटो केते हला से जो रेशियोटा मैग्निफिकेशन ता कहंती मैग्निफिकेशन परिवर्धन ना कोन तार ओडिया सेटा कहीं लेखिनी मु परिवर्धन ना कोन ता ना ओडिया आइछि बाबा आगे सर परिवर्तन which h by h naught is equal to minus v by u the object sorry image distance by object distance किंतु माइनस साइन अछि मन रखि थाटा लिखि दियो अंक करो ए अंकटा कलो तो करिकि के गोटे मिनिट भीतर देखैबो तापरे बंद कर दबा सरला तो an object is placed at a distance of 30 centimeter from the concave mirror तार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा u is equal to कोन प्लस ना माइनस के कहबो Plus. sir. रथे तुम्हें जदि प्लस कहू था ताले ब्रह्मपुर रे प्लस Sir, mu minus सॉरी किए गोटे गोटे प्लस कहला सबु बेले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा नेगेटिव से साइनी सरफेस रो पट्टे रहिबो नले रिफ्लेक्शन केमति होबो तेणु कन्वेक्स हो कि कनकेव हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा सबु बेले नेगेटिव मने रखि थाओ मुसेडी लिखि देली अच्छा फोकल लेंथ से देइछि एफ टा कोन पॉजिटिव टा नेगेटिव कनकेव मिरर रो Negative. पॉजिटिव के कहला रथे पुनी पॉजिटिव कहलो रथे negative coin. ओ नेगेटिव काइना देखो सेटा रहउची कनकेव मिरर रो फोकस टा रहउची एही पटे साइनी सरफेस पटे रहउची नेगेटिव सेटा केते ना -20 अंक दि चारटा अछि मु देइछि सबु प्रैक्टिस करिया पे व्हाट विल बी दी वेयर विल बी दी इमेज फॉर्म्ड सेटा हम कोन जणा नै 30 जदी 20 जदी फोकस 40 होउची तार सेंटर ताले 40 रु 20 माने 30 एठी ठिया आइची 30 माने एतिकी एठी ताले बिटवीन सेंटर एंड फोकस हमें जानिछु एटा तो 2f ना एटा f एला 2f तो एटा एमती गले एमती आसीबो एटा आमे कोन करिवा एटा फोकस बाट दे कि नबा आमे सेमती करियो ने एमती कले भी हबो एटा बढ़ई करी एमती करी एमती कले भी सेही पटे फेरिबो सो एटा बियॉन्ड सी पड़िबो इन्वर्टेड रियल एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस सेटा हमें जानिले किंतु से कुछ व्हाट विल बी द इमेज एंड आल्सो कमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज कहि सालेनी वेयर विल बी द हां वेयर विल बी द माने इमेज डिस्टेंस से मागुची सो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f so 1 by v टा से मागुची वेयर माने कोठी प्लस 1 by -30 is equal to 1 by -20 ताले हिसाब कले केते आछी 1 by v is equal to सेपट को नेले 1 by 30 minus 1 by 20 so minus 10 by 20
सॉरी -10/600 नुहे गोटे 60 ना 60 करवानी 30 दुणे एटा दुणे एटा 30 -1/60 -1 केते 60 60 नुहे yes तेबे उल्टे देले 1/v जदि एति ताले v इज इक्वल टू -60 तो डेफिनेटली सेम साइड रे आमे जानिचु सेही साइनी सरफेस साइड रे पड़िबो एवं परिवर्तित हबो 60 अवश्य तार लेंथ विषय से कहिनी किंतु खाली डिस्टेंस ए जो इमेज डिस्टेंस टा 60 सो सेम साइड रे पड़िबो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो साइड रे सही साइड रे पड़िबो इन्वर्टेड एनलार्ज्ड एंड 60 सेंटीमीटर दूरता रे पोल रु पड़िबो कार किए बुझिले हाते को अच्छा एटा गोटे अंक कल जोटी की हाइट आसीबो मैग्निफिकेशन जोटी यूज हबो ए अंकटा करो लिखिबा दरकार नहीं तो लिखिबा दरकार नहीं वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम कि हमको आरंभ करिया पड़ियो एका समय रे मते गाधेबा को टाइम लागिबो ढू ढू गाधेबा को पड़ियो the height of the object एटा सबु प्रकार रो कन्वेक्स पाई मध्य एका तुमे खाली प्रैक्टिस करिवो गोटे HO देछि ऑब्जेक्ट HO दोछि 2 सेंटीमीटर हाइट टा परपेंडिकुलर टू एटा तो रहइबो कनकेव मिरर पुणी देलानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 30 so u is equal to -30 its image is formed 60 centimeter from the mirror on the same side so v is equal to also -60 find the height of the image so एटा तो अति सहज magnification is equal to HO by HE sorry HE by HO I am so sorry इमेज टा केते गुणा बढ़िला केते कमिला HO is equal to -v by u ये सब दे देछि माइनस पुणी ऊपरे v टा माइनस बाय तळे भी माइनस भलो सब माइनस तेणु एठी माइनस माइनस प्लस हला अल्टीमेटली -2 रही गला सो जदि HE by HO टा देछि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -2 ताहले HE इज इक्वल टू केते ना -4 सेंटीमीटर माइनस माने सेटा इन्वर्टेड मु कहिछि हाइट टा जदि नेगेटिव बाहरला सेटा इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट हाइट टा सब बेले पॉजिटिव कारण सेटा रखा जाए प्रिंसिपल एक्सिस रे ऊपर बाय कन्वेंशन किंतु इमेज टा इन्वर्टेड हे पारे इन्वर्टेड हला माने नेगेटिव आसीबो ऑटोमेटिकली आंसर रे नेगेटिव आसीबो इन्वर्टेड बंधुगण तमे जदि अन्य सबु कार्य सारी देइछ ताहले आ गोटे कन्वेक्स लेंस रो मध्य कन्वेक्स मिरर रो मध्य अंक करो एवं तार आंसर देइछि देखो एई भितरे आमे एई मिरर इक्वेशन टा केमती प्रूफ टा मु देइछि एठी एवं r is equal to 2f केमती हला तार भी प्रूफ देइछि एवं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर देइछि डेंटिस्ट माने केमती कनकेव मिरर यूज करंती गाड़ी रो पछ दूर जिंस देखिबा के केमती कन्वेक्स मिरर यूज हुए ए सब देइछि आउ तापरे असाइनमेंट भी देइछि घरे प्रैक्टिस करियाकू तार आंसर भी देइछि तमे आराम रे कर दबो प्रैक्टिस कर देले तमे कॉन्फिडेंटली तमे भलो करिवो तापरे हमें रिफ्रैक्शन विषय रे पढिबा फ्रेश माइंड रे गाधेई पड़ो एवं जे गाधेइछ बा न गाधेइबो ताले अंकटा कर बसिकरी बाय बाय bye bye YouTube viewers please join me after just at 8:30 don't go away anywhere channel mane कहंती please don't go away anywhere we are right back after the commercial break bye bye